Hey everyone, I'm Christina and I'm going to teach you Sonnet 1 by William Shakespeare. I hope you all are doing good and let's get started. So sonnet 1 is a really easy one, and I believe the sonnets are really easy than any other things that are mentioned in literature, and they are really scoring also. So you just have to keep a picture in your mind that अगर हम ये एक सोनेट पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि इस सोनेट में ये थी दो, तो ये दो पॉइंट है, इसके ऊपर हमें अच्छे से लिखना है, संक्षेप में लिखना है। अगर हिंदी में बोले तो यू हैव टू राइट इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी elaborative way. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है सोनेट का, जो आप अगर मेंशन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अलग से उभर के दिखेगा, और वो ये है मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो छोटे पॉइंट है वो उभर के नहीं भी दिख रहे हो तो जस्ट मार्क देम विद अ ब्लैक पेन सो दैट योर टीचर नोज कि हाँ भाई आपको आता है। तो ये मैं करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं ट्रिक्स। आप भी ये ध्यान रखें। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, आपको ये सोनेट की पब्लिशिंग डेट याद रखनी है, एंड दैट इज 1609. You have to remember this, okay? And now the second point, that sonnet 1 is a procreation. So the first 17 lines in this are a procreation sonnet, because they are aiming to a mysterious fair youth, urging him to marry and have offsprings before it's too late. Not like nowadays Tinder dates. So scenario and whole sonnet is about lovers to get married soon and have a family. That the lover is urging the young youth, the fair youth, the youth that is self-obsessed, and he is like relishing his own beauty and all these stuff. तो यहाँ पे एक जो यूथ है जो अपने आप की सौंदर्य को उभार रहा है और निहार रहा है, उसकी लवर उसको बोल रही है कि तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट। कंप्लीट सेट ऑफ सॉनेट्स आर सेपरेट सोलोलोक्य, एंड अगर आपको सोलोलोक्य के ऊपर पूरी अच्छे से एक डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं सब समझा दूंगी। ठीक है, अब सोलोलोक्य इज अ स्पीच दैट इज गिवन बाय वन टू वन सेल्फ। आज मैं जो बोल रही हूँ वो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, वो एक सोलोलोक्य की तरह हो गया। एक नरेटर दूसरों को एड्रेस कर रहा है, वो अलग चीज़ होती है, और जो सोलोलोक्य है वो ऐसा है कि मैं खुद के लिए ही एड्रेस कर रही हूँ ताकि जो मैंने जो बोला है वो मेरे ऑडियंस को समझ आ जाए। ये उस टाइम का एक रेवलेशन काइंड ऑफ थिंग होता था, क्योंकि जो ऑडियंस बैठी होती थी उनको ज़्यादातर समझ नहीं आते थे प्ले क्या चल रहा है। ऑब्वियसली मैं भी जब पढ़ती हूँ आज ये शेक्सपियर के प्ले एंड ऑल, मैं सोचती हूँ ऑडियंस को कैसे समझ आते होंगे, बट दे यूज टू गिव अस रेवलेशन ऑफ द चैप्टर्स बिफोर द प्ले, एंड दिस इज कॉल्ड सोलोलोक्य। जब हम इसे कंबाइन कर देते हैं, व्हेन वी कंबाइन द होल फॉर्म, वी सी अ वन मल्टी-फेस्ड स्टोरी linked by various themes, symbols, motifs. In sense, there is a relationship between poet and the lover. Stands out because the masterful structure and the language, not to mention the complex use of metaphors and motifs. If you are doubting right now that what is motifs, it is often the idea or image delivering a symbolic value. So it's just something, if you are needing more information, then I will make a literary device video also. In that I will explain all these things, so we should not so you have to remember that the theme of the sonnet is procreation, and with that you have to remember that there is a picture that is like from the backside is reflecting the whole scenario, that why there is a procrastinating in their marriage, and that is because of the self-obsessed nature of man. And the poet is self-obsessed and narcissist, and he is not able to understand the value of time and the value of marriage and the value of good and beautiful family. That's why he is just observing and encouraging himself and his own beauty, and he is just cherishing himself. And that is something that the lover is asking the poet to not to do all these stuffs. आपको ये याद रखना है कि जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो खुद इतना सुंदर है कि वो अपने आप को ही निहार रहा है, और जो लवर है वो उसको बोल रही है कि आप इतना मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड ना रहें और आप जल्दी से शादी करके अपनी एक फैमिली बसाएं।
So now I'm going to explain you this whole sonnet in a more detailed way, and this is called the quatrains. And quatrains are like four verses or four lines from a sonnet or from a poem. So in this way, we can just have a clear view of the sonnet in a more beautiful way. So it will be easy also for you to understand the whole sonnet in a very easy and shortcut way. So just note these things down. The first quatrain focuses on the importance of having children and preserving the beauty and the truth. The rose is actually it's a capital rose. So this actually is symbolizing towards the not the fakeness of the society, but towards the reality. The beauty and the truth should be real, and that's something that the poet is trying to project through this like the first four lines, that you should be real just like a real rose. आप सेकंड क्वाड्रेंट में से ये याद रखेंगे कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, और उसमें जो वर्ड्स की इस्तेमाल है वो भी थोड़े हार्ड है। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट इज़ वेरी चैलेंजिंग मेट्रिकल एंड द लैंग्वेज इज़ हार्ड, reflecting the difficulties of speaker as it is aiming for the young man to concentrate on non-narcissistic way and not to eat up his own energy। आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, आप खुद नार्सिस अपने मतलब सेल्फिश ना बने। नार्सिसिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई आदमी खुद से ऑब्सेस्ड हो, तो आप खुद से ऑब्सेस्ड ना रहें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचें, ये है इसका मतलब। तो आप इसको याद रखें कि थोड़ा टेंशन में है, ये जो क्वाट्रेन है ये थोड़ा टेंस्ड है। तो आप इसको याद रखिए कि इसको आप ऐसे ही फ्रेम करें। और उसके आगे हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एम्प्लाइज दैट इट वुड बी सेल्फिश नॉट टू प्रोपोगेट सच अ ब्यूटी। प्रोपोगेट का मतलब है कि इस ब्यूटी को आप आगे नहीं लेके जाना चाह रहे, ये एक सेल्फिश डिज़ायर है। तो ये सोनेट के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा पॉइंट मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था मैगजीन में कहीं पे, वहाँ पे ये लिखा था कि दे रियली वांटेड पीपल टू लाइक ब्यूटीफुल पीपल टू गेट मैरिड सून एंड हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन एंड हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। दैट वाज द मेंटालिटी ऑफ पीपल एट दैट टाइम। सो ये सिर्फ शेक्सपियर नहीं, इनके अलावा भी बहुत लोगों की मेंटालिटी थी कि जो सुंदर लोग हैं, जो अच्छे लाइक ऐसे रेसिस्ट नहीं वाली बात है, बट हाँ जो अच्छे ब्राइटफुल लोग हैं वो जल्दी से शादी करें ताकि उनकी एक बहुत सुंदर फैमिली बसे। ये एक मेंटालिटी थी उस टाइम के लोगों की। तो इस मेंटालिटी के साथ ही एक सोनेट लिखी गई है। आगे हम देखते हैं जो कपलेट, देयर इज द प्ली। कपलेट का मतलब ये होता है कि जिसमें दो लाइन होती है, कपलेट, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वे। एंड इसमें एक प्ली है कि द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू चिल्ड्रन। सो जो ब्यूटीफुल लोग हैं वो जब उनकी शादी होगी तो उनके बच्चे ब्यूटीफुल होंगे, उससे पूरी दुनिया ब्यूटीफुल हो जाएगी। नाउ लाइन वाइज आई एम गोइंग टू डाइसेक्ट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोनेट एंड whatever I found interesting plus important for you all. So we see line wise over here that all the beautiful people should marry and have beautiful children, and we over here is the world, and it is specifically the upper class at that point of time. And now we will see the next slide. So the second line holds the idea of long lasting truth, the truth that is not like the society, the beauty that is not like the society. The society is false, the beauty of society is false, so it's projecting beauty's truth. So in this third line, we see the natural phenomena of life. As we get older, we get ripen and soon we die. So this is very realistic way we have understood through the third line, and now we are moving to the fourth one. So in the fourth line, we see the use of double alliteration, and I think so it's important, so I've marked it for y'all. So in fifth line, we have to notice this, that there is a contradiction there, that it's a plead also and a limit also. So in sixth line, we see that Shakespeare, being a Shakespeare, he gave a challenging consonant pronunciation for the readers, and it demands them to be creative with the clauses. So in the second part, we see that the speaker is discussing the lover, that he is a candle that is burning from the both end but is not able to share the light to the world. Like he is so narcissist that he is not willing to share his beauty with the world. Keep a clear view that how is that person going to share his beauty with the world? Through his offsprings. When this beautiful guy will have offsprings, this way he is going to share his beauty with the world. So we have to keep this thing in our mind. And now the next slide.
So now in the seventh line, we see the use of antithesis depict the agony of the speaker, and the speaker is having that anguish in his heart that why is this person offering the mere scraps from his abundance. And just a little information about antithesis. Antithesis is something that in a sentence two contrary words are existing all together. So eighth line, we see this guy so sweet, he has a beautiful personality, but he is his own biggest enemy because he is not offering himself to the lover, and he is a narcissist person, and a narcissist and self-obsessed person is always his own biggest enemy because you always have to love others as you love yourself. And then we have ninth line. So in the ninth line, we see a mirror image and a rhythm. So a mirror image is the world's fresh ornament. That's something that you are calling your lover as the best piece around, like the best handsome thing around. And now we are going to hit our 10th slide. So in the 10th slide, we see that fatherhood and after marriage effect is explained in a metaphorical way through nature and the seasons of spring, the time of love, romance, and conception. So we also see that the herald means a sign of something about to happen. So we have to keep these 2 points in our mind. So in 12th line, we see again a use of antithesis, tender and shrill. And shrill is something that is mean and rude and unpleasant spirit, and tender is something that is soft, gentle, and elegant. So we see a contradiction itself in the nature of the lover. And now the 13th line, we see. So 13th line is again a rhythmic one, and now we see that the person, each and every person in this planet should agree that they should not be greedy and should not consume for themselves only and let others starve. This should not be the mentality of men. So now the sonnet is concluded with this, that the speaker is eagerly waiting for offspring and for a family, a beautiful family, but the lover is so arrogant and self-obsessed that he is not even considering the idea. So I have tried to explain the whole sonnet as far as I can. So now there are three slides that are really important because they carry the internal rhythms, the together with consonants and assonance and alliterations. So I've tried my best to put them all together for y'all. So with this, the sonnet is done. See you all in the next video. I hope you all like this video and share it with your friends, and do comment down below and tell me कि ये कैसा लगा आपको, and आपके जो भी डाउटफुल चैप्टर्स हैं, आपके जो भी कोई डाउटफुल सिलेबस में कुछ भी हैं, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करें और मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगी. थैंक यू ऑल.